B.Tech from Uttar Pradesh Technical University in Meerut. Then after course after B.Tech, I got a job in Infosys for So what year was this? What year did you complete your graduation? it is like 2014. Okay, Yeah. great. So I completed my graduation in 2014. After that, I worked for Infosys for like 6 months or Mm-hmm. 7 months. After that, I got a job in Cisco Systems. So Mm-hmm. I was enrolled for their, there's a department called TAC, Technical Mm-hmm. Assistance Center. So for that, I became an engineer for 7 years, Mm-hmm. and I made some money. Uh, and I was in that corporate thing for 7 years. So after that, COVID happened, and uh, you know, after that, some things changed in my life. Uh, Where were you Family. living during that time when you were working for Cisco? Where were you living? 5 years I was in Bangalore, so Okay. it was offline. So I had to go office daily. So after 5 years, COVID happened. Then for 2 years, I was working from home, Mm-hmm. from Patna. Okay. Yeah. So after 2 years, after 7 years, COVID happened. Then something changed in my life. I lost some people, and family person, my closest ones. After that, then I thought, okay, um, I can do this job for forever. I want. Let's do something that I'm really, I want to test. So basically, I try to experiment many things in my life personally also. So apart from my job, I had many hobbies that I used to follow that time. So in 2022 October, I took a gap year from my career, and then I started traveling India. Not because I love traveling too much, uh, but because I love making videos. So eventually, during the COVID, I started making videos for experiment, and just to know, if I can make some new hobby. So after that, I really like that. People also loved what I did that time. That is, the kind of videos that I used to make. Being a beginner was pretty good for a beginner. So people encouraged me. I got motivated. I made more videos. I went to travels. I made more videos, and that led to me leaving job, uh, and then going for a travel journey of almost a year, more than that. And during that traveling, I made shorts, small videos of 60 to 90 seconds for almost 250 days daily. So every day I used to make a story, craft a story out of my travels. Mm-hmm. And from South India, covering all the South Indian states like Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, the coastal regions like Goa, Pondicherry. And from there, I shifted to Northeast, and that's where I blew up. Like in the Northeast, I covered like 4 states, the Mm-hmm. three sisters and one brother. They call Sikkim. So after that, I got viral, and I got in 4 months, I got my YouTube monetized, and I got like 80,000 followers on Instagram, and Mm-hmm. yeah, and like in YouTube it was around This was 2022 only, or yeah, 2022 October I started traveling. So uh, maybe October, around November, early 2023 23 beginning. beginning. Mhm. Yeah, January, February. So after Hornbill Festival in Nagaland. Okay. So yeah, yeah, I got followers pretty fast, Okay. and I was doing that short. I did, and it was wonderful traveling all over all over India, my country. That I also went. Actually, I while making videos, I thought, okay, at least I should know my country. The place where I am born. So that was also motivation, and also want to make that. I wanted because I got the followers fast and subscribers, and then a lot of millions of views. So I thought, okay, if I can make this career sustainable, then there will be no problem, and I'll have fun making these videos, for my When you entire life. when you first quit your job, it must have been pretty scary, right? So initially, it was just started off as an experimentation thing where during COVID, because you lost someone and you felt like, okay, you put your life in perspective, probably, right? You felt that, okay, life is more than just about
going to a job and earning money. And then at that point, it was still experimentation. But from that to taking that big leap of completely leaving your job, how did you get that courage or confidence? Yeah. So after COVID, my thought process was like, I've got one life, and I must not try things that I actually want to try. So let's because and I can only work one thing at a time. I cannot do two different things. So I thought, okay, let's get this job thing some break, and after that, yeah, that required a lot of courage. Personally, personally, I was fine because I had savings, and I did a lot of savings in those 7 years. And actually, at that moment was the time when after a few years, ek do saal baad, my marriage was supposed to, कि हाँ इतना साल हो गया, इतना उम्र हो गया है, अब तुम्हारा शादी का समय आ चुका है ऑलमोस्ट, तो Hmm. ऑलमोस्ट सिनेरियो में था मैं. No, तो मैंने Matlab, did सोचा. you have somebody that you were going to get married to, or bas they were going to start to look for somebody? Yeah, exactly. They have started to look for the girls, and एक दो नाम ऐसे आ रहे थे कि हाँ ये है वो है. Mhm. तो मैंने सोचा कि चलो, बिफोर डूइंग दैट आई मस्ट ट्राई जो मेरे दिल में है कि हाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए शादी के बाद, बच्चे बच्चे हो जाए, बिकॉज I myself can alone, can handle that, but my children, my wife don't deserve the frustration, my frustration. Okay, so that was my thought process कि हाँ हो जाएगा, जितना सेविंग्स है इतना तो मतलब 2 साल के लिए मेरे लिए काफी है. आई कैन एक्सपेरिमेंट इट. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आई डिड आई वाज क्वाइट फ्री फ्रॉम दैट बिकॉज आई हैव बीन कुछ शुरू से मैं काफी रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि अब 1-2 साल खुद को दे देना चाहिए, है ना, इफ हर्ट्स से सो. And what did सो your family say at that time when you सॉरी. said, what did your family say when you said that I want to do this? What? They aren't. I mean, even if I am I get I become a businessman earning crores, they will not be happy because I'm not doing a job. So they have a pretty conservative mind that their son must do a job. So they were not happy, and they're still not happy. Like most families in India. Yeah. I mean, yeah, I hear about people. I don't know exactly about the people's family generally कैसे चलता है, but my mom was strictly like that कि नहीं, you must do a job. Mhm. So yeah, so मम्मी को जैसे तैसे कन्विंस करने की कोशिश की, जो कि नहीं हुआ एट द एंड, बट स्टिल आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. आई लेफ्ट माय होम, सोच के कि हाँ ठीक है, मम्मी बाद में समझ Mhm. जाएंगे ना, शी विल अंडरस्टैंड Mhm. later. Yeah, after that I traveled, gained a lot of subscribers, met a lot of people, creative people, went to different unique remote places where I saw a lot of people, their families, communities, and I've captured a lot of unique stories, uh, varying from when I went to Uttarakhand and there was a guy who was digging a pond alone for his villagers because there was a lack of water. So I asked him how many days or months it would take for you to dig a pond, like what you have imagined. So he said 4 years. So I was like, oh my god. So Yeah. 4 years he was supposed to dig the pond. Then I documented it. Then that video got pretty viral in that area, and the villagers who were not supporting him started supporting him, and the people who fled the village, they were in the cities. They saw that video and they sent donation, to Wow. help to that village. Yeah. Wow. So So that's actually one of the very important ones that I wanted to understand from you. That like you cover a lot of unknown stories or unknown places and maybe mm, remote destinations and things like this. No? So how do you, first of all, how do you find these stories or these locations that you want to cover? And next is, what is your filter for how, for which one of which stories you want to tell? Like you must have some filter now that this story is worth telling. So how do you mm, decide? First of all, how do you find them, and then how do you decide that, this ये story बताना पड़ेगा. We have to like make this. We have to tell this. okay. Okay. So as a as a in anything like in media or anything, in either you write
Either you make videos, or or anyhow you put some information in any form, pictures, videos, articles, anything. If people are, people are getting hundred of things to read or hundred of things to watch, the only thing that separates and gives attention to one or two of those articles in those hundreds is the newness, is the uniqueness of that article or the video. So my goal is always to create something new, to tell something new story uh, to uh, to people. Even if the components are old, it's very common. Like I'm vlogging while I'm going to market, so that is there. Everybody does that, but my intention is somehow to find some uniqueness, some things that is left unseen by people in day-to-day life. So I try to capture that. So yeah, my motivation is like, हाँ अगर कोई अच्छा story मैंने देखता रहता हूँ, I go to libraries, I go to I watch movies, I watch like other people, I watch other videos also for inspiration. And I have joined a couple of volunteering websites, like where there are a couple of NGOs, and I get to travel there and be a volunteer. I joined that. So from there, collectively, अलग-अलग जगह से information लाके whatever I get कि हाँ ये चीज जो है ये नया है, और this is a thing that people have not heard story about. तो मेरे को लगता है कि हाँ ये कवर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज को मैंने खाया, सोया, मैंने वहां गया, वो गया. It's like So especially say for just a general traveler, they even if they're not interested in making content, na, just a general traveler, if they want tips on how to find some, like unknown destinations or like something that's very interesting that they want to travel to, how can a Mhm. normal traveler find it? So you said that you go to library or you check other videos and this, na? So that is from a content perspective. But say just a regular traveler, what Mhm. tips do you have for them to find some offbeat destinations, not very common? Okay, so basically for that, there are information, whatever you get from internet, that is one thing which is common. Like Hmm. crowd is whatever is in the internet, crowd will be there. So Hmm. in order to find something that is unique, new, and very raw, you need to actually go to a place and then explore there. So And when uh, you say explore, you mean like talk to the locals and all? yeah, exactly. I mean, the people who travel raw, they like to differentiate themselves from other travelers by saying that they are the real travelers. On the other hand, people who just come for a couple of days, or stay in hotel and do the things that is written over the internet, they are the tourist. Hmm. So that is the difference between tourist and a traveler. The traveler goes to a place and he tries to gather more and more information from the people, from the local people, from the people who knows that place. For example, if I go to, for example, I went to Zero Valley. Zero Valley is the place where there's a tribe called Apatani tribe, which is the most humble tribe of Arunachal Pradesh, and that is the same tribe which where the women, they use nose plugs and the tattooed face. So that is a tribe. So I wanted to somehow make a video about it, but I didn't know how. So I went there. I stayed in in the main city. So first of all, if you go to any place, you go to a city, because that's the highway, A the highway. transport hub. That's a transport hub, either airport, yeah, railway station, or whatever will land in the city. Yeah, exactly. So you reach that place, you try to find a place where you can at least rest for the day, or couple of days. So in those couple of days, what you do is you try to roam around here and there. Okay, so sometimes roaming around gives you an opportunity uh, to find something that like it's like a thread. So you go to a place, find something, you pick up that thread, and from that thread will lead you to somewhere, or some people, which will again lead you to some place, with that, with his thread, and that will lead to you getting information about an experience which you could experience and capture in the video. So मेरे साथ क्या होता है कि in the Zero Valley मैं I was just traveling है ना, तो 26 जनवरी था, and
26 जनवरी 2023। तो उस समय मैं वहाँ जीरो वैली में पहुंचा, अगला दिन हो रहा था, मैं जा रहा था चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से सिटी में। तो वहां पे अचानक से एक सब्सक्राइबर जो saw me and she started shouting on my face, oh Ashwani. So I was like, okay, hi. By उसके now बाद you had फिर, already gone viral. yeah, by now I already gone viral in Northeast mostly, Great. because mostly वहीं से आ रहे थे ना वीडियोस। Okay. तो um, so अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सो 3 महीने में आई वाज वेरी फेमस इन नॉर्थ ईस्ट। Mm. सो वहाँ पे शी सॉ मी एंड वी टॉक्ड, साथ में चाय पिया, समोसा खाया। देन आफ्टर बिफोर लिविंग आई जस्ट टोल्ड हर कि माय इंटरेस्ट, अबाउट माय इंटरेस्ट, कि हाँ मेरे को आई वांट टू समहाउ कैप्चर द एसेंस ऑफ आपतानी ट्राइब, कैन यू हेल्प मी? Then she told ki, I do not guarantee you, but I will try. And after saying that, she left and took my number. And night before sleeping, her message came ki, okay, my friend, a girl lives in a village, the tribal village, far from here, and it's like the very remote village where Apatani tribe lives, very in a very raw form, and they have their homes there and like that. She said, her friend has said yes for me to stay for 24 hours in her house. So I said okay. So next morning she came, and she took me from bike, in the bike, from वहां से सिटी से फिर विलेज लेके गया। वहां पे फिर हमने like we experienced so much rawness, so much experience like a family. We went from there was a lot of stories starting from there was a dog, white dog and a black dog, two dogs. There was one more. The story is the black dog was quite friendly, but the white dog was pretty scared of me. I didn't know why. So I spent time with them, heard a lot of stories. So she told that her third dog got lost. I said, how? So she told me the actual story, which is keep at sometimes the local boys, they come and they kidnap people's dog. So or उनको kidnap करके they sell it to the market. There are a lot of people that eat dogs there. Uh-huh. So I said, oh shit. Then I realized, okay, maybe the white dog has somehow experienced or escaped the kidnapping, and because of or somehow got tortured. Yeah. Then that's why he was pretty scared. And why? But the good thing was, after spending a lot of time, he came to know, he उसको पता चला मैं कैसा हूँ। then I मैंने उसको खाना खिलाया, उसको थोड़ा प्यार किया। So until सोने से पहले he became my friend. Nice. Nice. So a lot of your videos and content is also about like these personal connections, like you, that Sikkim family, Julian Rai family, all of these type of reels, right? So Yeah. how do you end up building that bond so quickly with people? What is your secret weapon? How do you gain that trust and build that bond with strangers so quickly? Mm, okay. So it is actually it's pretty straightforward. It's very simple. Uh, when you are at home, you must have seen ki, when you are at home, or the people you meet less, or the new people in your life, you will have a better, a positive positive relationship, a positive exchange of words, all the time ki हाँ, how अगर मैं you अगर I am your friend and I introduced my some other friend, mutual friend with you, so probably your first meeting होगा, it will be pretty chill, because you're getting introduced to those that person पहली बार में। तो ऐसा जो स्ट्रेंजर से मिलता है ना, इट्स द सेम थिंग कि आप जब स्ट्रेंजर से मिलते हो ना, so I want to treat him nice, they want to treat me nice, because they are seeing, and हम लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, एंड ऐसे स्टार्ट ऐसे होता है। So with time, just for example, सिक्किम में मैं रहा for almost 25 days. So that was pretty awesome, because that family I didn't know, and I think if you talk nicely, people will
talk nicely. It's simple as that. I mean, अगर आपने किसी को गुस्सा दिखाया तो दूसरे को भी गुस्सा आ जाएगा, अभी नहीं तो सेकंड कॉन्वर्सेशन में, थर्ड कॉन्वर्सेशन में अगर आप स्वीट हो, so people, even though people might make fun of you a little bit sometimes, but mostly they will be sweet to you. So entire while traveling, I think the credit goes to traveling because uh, आपको इतना चीज दिखाता है ना ट्रैवलिंग करते वक्त, आपको एक नया नया चीज देखने Very को मिलता है. comfortable with new people, and it opens up your Yeah, mind. yeah, it feels like, for example, I went to Sikkim. Hmm. It was a very new place to me. I saw, like very unfamiliar place, and it was, a small, very remote village, and Hmm. there was this family, जिनका इतना बड़ा बिल्डिंग था वो गांव में, and I was surprised. उनको देखा, मिला, जाना, जानते 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 जानते, it was very surprising to me. फिर ऐसे रिलेशन बढ़ गया, ऐसे करते करते हो जाता है. So were you always like this, or is it that as part of this journey, you have changed gradually? And like, what are the major changes in you that you reflect on now? If you see that as part of this journey, if you look back, you can say that no, I've changed a lot in this way. I don't know about if the travel has changed anything in me, because it is very difficult to actually know if there is any change. But um, what actually, uh, yeah. But after from 2022 to 2024 or 25 right now, what I have felt a drastic change is the amount of um, the self awareness and the calmness that I feel from within. I have become more of a confident person than before, and very, very confident. I mean, I've become very confident. I don't know how. Is it the traveling, or is it just me growing up, being matured? But yeah, traveling may, you go to people, up, there are two people standing in front of you. You don't have any option to feel introverted or Hmm. feel shy. The goal is to talk, to go and talk, even if you're shy. Hmm. Hmm. Very interesting. And I think one thing that comes out from a lot of your videos also is like, I think people connect with you because you come across very authentic, like you as a genuine person, right? But have you ever felt that you have to sometimes, in order to go viral, you have to compromise on your authenticity? Has that ever been the case? Something like that, like where you have to decide that, nah, some viral content if I have to create, then maybe I can't be authentic. Hmm. There are, I mean, people do. I've seen people change their nature, but personally, I have been kind of a, somehow everybody is. What I believe is, somehow people become people pleaser in one way or another, in one level or another. So if you try to meet some new person, you try to be pleasing, like hi, smiling all the time. But with me, the traveling ये मेरे को सिखाया कि be as authentic as possible, क्योंकि traveling is not fun all the time. Sometimes क्या होता है कि you're visiting a place, you're feeling good, उसके बाद you're just left alone. So it's always up and down. So वो डाउन होता है ना, so डाउन होने के बाद बहुत कभी कभी अजीब सा लगता है कि हाँ, अकेलापन, कोई नहीं है. I'm going to a place where, very crowded place where there's a lot of family, and I'm I'm the authentic. only one. Yeah, I was alone. There was nobody with me. So मेरे को वो चीज सिखाया कि हाँ भाई, ऐसे life is not always fun, and I must accept what it is. कि अगर हाँ मेरे को दुख हो रहा है तो है, I mean, it is real. I have become more authentic, you can say, with travel, and that has made me happier actually to accept that fact that कि yeah, I can be. I मेरे को पसंद नहीं है मेरे को स्माइल करना, तो मैं नहीं करूंगा, है ना? Hmm. Hmm. ऐसे Like, होगा. do you feel the pressure that after one video goes viral, do you feel the pressure that to recreate more and more viral videos? And then how do you stay innovative? Because early on you said that you try to find something new, no? That in the video, Mhm. that is the thing. How do you continue to stay innovative? Like, how do you handle, like any author or any creative person, they often have
like creative blocks, creative burnouts, and roadblocks, right? So how do you personally handle those, like creative burnout and all? That only creative burnout only happens if I discontinue. Hmm. If I keep on continuing, that I have noticed key, the moment I have taken break, that is where I feel creative burnout. If I don't take a break, I won't feel creative burnout. And in order to be creative, it's pretty simple. You have to bring a minor changes. And also being creative is easy because every time you tell, traveling is such a good niche for YouTube, because you travel new place and you show every new things. So people will not get bored of कि हाँ ये तो घर में बैठ के ब्लॉगिंग नहीं कर रहा है ना, ये लड़का ये तो बाहर जाके नए एक्सपीरियंस दिखा रहा है, और हमेशा जब भी वीडियो लाता है तो नई कहानियां लाता है. सो नई कहानियां जो है, दैट इज itself is a new thing which is uh, people will think यार ये हर वक्त नया स्टोरी लाता है. बट along with that, what I do is कि I try to play with my script, with my editing every day. Like every day I make 10 दिन हुआ, 10 दिन में अगर 10 वीडियो बनाऊंगा, you will see me my editing, a different kind of editing style, or in all 10 of them. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दिखा रहा हूँ तो कुछ मजा आना चाहिए लोगों को ना, तो लगना चाहिए कि हाँ, क्रिएटिविटी नाम को मैं थोड़ा, जो चीज है कि बोलते हैं क्रिएटिविटी इज लाइक ब्रिंगिंग समथिंग न्यू, उस चीज को थोड़ा हाँ, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है, फुलफिल होना चाहिए कि हाँ उसका मीनिंग क्या होता है. उसका मीनिंग ये होता है कि यू प्ले वट एवर, तुम्हारे जैसे एक वीडियो बनाना है, उसकी जो हो रहा है सो हो रहा है वो तुम दिखाओ, है ना. उसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, उसके अलावा तुम कितना खेल सकते हो, हाउ मच फन यू कैन हैव विद दैट. Hmm. सो Got दैट it. ब्रिंग्स, Got it. So there's no real limit in terms of what you can do. Creativity या नो. doesn't mean that it's completely has to be new. Even a little bit when you change some things, it could end up becoming something very different if you make. मतलब वही, अगर आप सोचो ना, आप कैमरा ले रहे हो ना, किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, Hmm. है ना, पहाड़ के ऊपर से, और Hmm. उसी वक्त आपने जो कैमरा है, Hmm. कैमरे को पहाड़ से फेंक दिया, है ना. Hmm. Hmm. So that becomes so much explosive, I mean, something so much interesting. Yeah. कि story is all about that. There's a normal thing going on, है ना, normal चीज चल रहा है, अब उसमें अचानक से कुछ explosion होता है, boom. There is new normal, which makes a very interesting story. Got it. So tell me how your whole creative process from the idea to the execution, like, is it Hmm. a lot of it, is it last minute, or is it like you really planned everything beforehand, booked everything beforehand, or is it as you go, you go with the flow and make the content? And till now it has always been spontaneous, because पहले तो कंट्री जाना नहीं था मैंने, तो मेरे को जानना था कि हाँ अगर प्लान बना के मैं जाऊंगा तो सिर्फ मैं वो चीजें जान पाऊंगा जो कि इंटरनेट में लिखा है, राइट, Hmm. इंटरनेट बताता है. So I wanted to go spontaneous too, because I wanted to go visit the villages, remote areas more rather than the cities. तो वो था मेरे अंदर कि हाँ, जैसे हमारा क्रिएटिव प्रोसेस तो ये है कि नॉर्मली है, कुछ खास नहीं है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू कवर a story, so I go there, I look into, कि हाँ, थोड़ा देखा कि क्या है, विकिपीडिया में जाना उस चीज के बारे में, क्या क्या है, क्या क्या नेचुरल वो है ना, वो तो मेरे को पता चल गया क्या क्या यूनिकनेस है ना उस चीज के बारे में. आई ट्राई टू फाइंड सम हाउ टू लिव दैट स्टोरी, नॉट ओनली कैप्चर बट टू लिव दैट स्टोरी, सो दैट आई कैन एक्चुअली, जो मेरे अंदर से जो एक्सप्रेशन निकलेगा वॉइस ओवर देते वक्त या फिर स्क्रिप्ट लिखते वक्त, वीडियो, वो एक नेचुरल एक्सपीरियंस हो ना. बाहर से मैं विकिपीडिया पढ़ के मैं बता तो दूंगा कि हाँ ये जगह ये होता है, ये होता है, ये बहुत स्पेशल है, बहुत इमोशनल है, ये. लेकिन अगर मैं वो एक्सपीरियंस खुद जीऊंगा वहां पे रह के, तो वो जो फीलिंग्स अंदर से निकलेंगी वो नेचुरल होंगी, काफी ऑथेंटिक होगी. तो मैं वो जी के फिर उसके बाद जब मैं सब कुछ शूट वूट हो जाता है, देन आई गो टू अ प्लेस, होटल, और इफ देयर इज एनी फ्रेंड नियर बाय, तो वहां जाके फिर आई स्पेंड अ कपल ऑफ डेज, लाइक किसी में ज्यादा लगता है, किसी में कम लगता है. तो वहां पे जाके स्क्रिप्टिंग हो गया. स्क्रिप्टिंग होने के बाद फिर इंट्रो पे फर्स्ट आई फोकस ऑन इंट्रो. इंट्रो सही होना होता है यूट्यूब में या फिर कोई भी
मीडिया आप पब्लिश करो उसमें। तो इंट्रो, आई वर्क ऑन इंट्रो कि हाँ इंट्रो ये होना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी का जैसा है वो एडिटिंग में तो मतलब थोड़े इवन द मोड़े चेंज। डिजाइन एंड ऑल ऑफ दैट, और इंट्रो मतलब इवन द ग्राफिक डिजाइन एंड वो थंबनेल वो सब क्या? मतलब नहीं, इंट्रो मतलब वो थंबनेल वगैरह तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है वो आइडिया होता है, राइट? हम्म, आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए, देन यू आर गुड टू गो। सो आफ्टर दैट कम्स थंबनेल एंड आपका जो टाइटल है वो हम्म, सेकंड इम्पोर्टेंट होता है। वो अगर आपने अच्छा बना दिया तो लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो आता है वो इंट्रो आता है, वीडियो खुलता है, तो वो देखेंगे कि इंट्रो कैसा है। अगर इंट्रो ही बोरिंग रहा तो दे विल स्किप, है ना? तो यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड इन द थंबनेल एंड द आइडिया एंड हम्म, द टाइटल। अगर आपने वो जो प्रॉमिस किया था वो अगर नहीं दिया शुरू में ही, तो दे विल थिंक कि अरे ये मतलब ये मूर्ख बना रहा है, या फिर है ही नहीं इसमें वो चीज जो उसने बताया। तो इंट्रो उस तरह से बनाना होता है कि हाँ, आफ्टर दैट उसके बाद आप जितना भी डालो लोग देखते रहेंगे, हम्म। इफ इट इज गुड इनफ। So tell me one video which you made which you are personally very proud about, but for whatever reason it didn't take off very much. It didn't become viral or anything like that. Yeah, I have that. One second. Mm, yeah, I mean, my favorite, personal favorite is actually five ice cream seller and work on a couple of those actually। लेकिन जो मैं कहूँगा मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है देखने में वो दो हैं। एक Mhm, तो ये है, एक मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था, फाइंडिंग माय पैशन सीरीज, जिसमें कि 2 एपिसोड आए थे। तो दैट mhm, वाज वेरी अमेजिंग, आई मीन दैट कॉन्सेप्ट अमेजिंग, बट एक वीक काफी कम पड़ रहा था मेरे को वो सीरीज कंटिन्यू करने के लिए। और थोड़ा बजट का प्रॉब्लम आ गया था तो मैंने उसको छोड़ दिया था। mhm, तो आपने, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट, बट वो सीरीज में ऐसा था कि मेरे को अंटिल माई फाइंड माई पैशन दैट एपिसोड विल कंटिन्यू होता। उसमें था कि अलग अलग जगह जाके मेरे को पहले ये देखना था कि क्या क्या चीज़ है वहाँ पे, क्या क्या हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट मैं गया था गोकर्णा में। mhm, गोकर्णा में वहाँ पे बीच के किनारे रहा था। तो वहाँ पे मेरे को दिखा कि योगा बहुत होता है, लोग योगा बहुत करते हैं ना। तो मैं वहाँ पे गया, योगा होता है मेरे को पता चला। बट दूसरे दिन कोई, पहले दिन तो कोई मिला ही नहीं। मैं गया वहाँ पे कोई था ही नहीं बात करने को। फिर दूसरे दिन उसकी जो मालिक है योगा, जो क्लास की जो टीचर है, वो मेरे कैफे में जहाँ पे मैं रहा था वही वही कैफे में आई। तो मेरे को कैफे वाले ने तुरंत बताया कि वो आई है। you went So to I school. went to yeah, I went to meet her, and she told that this class is not for Indians. मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा कि because Indians basically do not spend this much of money in learning yoga। मैंने कहा कितने का है? तो she said कि 1.5 लाख का है योगा। तो तो उसने कहा कि मेरे, फिर वो लगा कि नहीं नहीं, योर व्लॉग अगर इफ इवन इफ आई बी स्पॉन्सर योर ट्रेनिंग, बट Mhm, हमारा जो ऑडियंस है वो बाहर का है, तो इंग्लिश में बेसिकली वो लोग सुनते हैं, तो नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर देन आई केप्ट ऑन सर्चिंग फॉर न्यू थिंग्स। mhm, तब वहाँ पे एक बार आइसक्रीम वाला बंदा मिला जो कि उस बीच में अकेला आइसक्रीम बेचता था, साइकिल साइकिल में रख के कुल्फी बेचता था एक्चुअली, और वो था लखनऊ से। mhm. और आई डिड नॉट नो कि 4 साल पहले मैं उससे मिल चुका हूँ। आई डिड नॉट नो दैट। एंड इवेंचुअली उस Just a coincidence. जस्ट अ कोइंसिडेंस। Yeah. और जब मैं उससे मिला भी तभी मेरे को पता नहीं था कि मैं उससे मिला हूँ। Mhm, तो मैं वहाँ पे गया, रात हो रहा था, वाइल आई वाज रिटर्निंग, है ना, सब होप मैं खो चुका था तीसरे दिन के बाद। mhm, तो अचानक से मुझे आइसक्रीम वाला चिन 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 करके उसका आवाज सुनाई दिया जब मैं आई वाज गोइंग डाउन द बीच। तो मैंने बोला कि तुम यहाँ पे आइसक्रीम बेचते हो क्या ये बीच में? तो उसने बोला हाँ। तो इंट्रोडक्शन हुआ ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा कि कल मेरे को बेचने दोगे, मतलब कल पूरे दिन के लिए जितना भी प्रॉफिट होगा मैं तुमको दे दूंगा, और बेचूंगा मैं, तुम आराम से बैठना। तो उसने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे ही क्या हुआ कि नेक्स्ट डे सनराइज हुआ, बट बारिश होने लगा। वो सुबह सुबह आया ही नहीं, वो आया ही नहीं, मतलब 12 बजते 1 बजते आया ही नहीं। मेरे को टेंशन हो रहा है कि क्या, क्यों नहीं आ रहा। देन अचानक से फिर 2 या 2:30 बजे ऐसे वो आता है धीरे, जब बारिश का खत्म होता है। मैंने कहा हे भगवान, थैंक यू। तो आया वो, बैठा, थोड़ा उसने कैमरे शूट करने के लिए भी हेल्प किया।
मैंने वहां पे घुमाया लगभग 4 5 6 घंटा ऐसे पूरा घुमाया है ना। लास्ट में लोगों को फिर लोग खरीद रहे थे उसको, फिर खरीद रहे थे कितना तो सेल मैंने हुआ? they started buying, and How much then sale? How much sales did you do? too much, I guess, 30 30 35. Yeah, Wow. Okay. yeah. That's quite So a huh? that's quite a lot, na? Both bus in you're saying in around 4 5 hours maximum. या मैंने थोड़ा बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के मार्केटिंग में कर रहा था ना, ऐसे कुछ भी बोल के, तो वो अट्रैक्ट हो रहे थे, हंस रहे थे ऐसे ना। तो और 25 रुपए का आइसक्रीम था, उतना सस्ता भी नहीं था, तो इट वॉज प्रीटी हार्ड, बट इट वॉज ओके, फन, मजा आ रहा था। तो लास्ट में फिर मैंने कुछ जो वहाँ पे वेंडर्स थे ना बाकी, तो वेंडर्स को फिर मैंने उनको फ्री में दे दिया आइसक्रीम, हालो हालो करके। फिर उसमें से एक वेंडर ने मुझे बोला कि नहीं ऐसे फ्री में तो ठीक है, खा लिया उसने, है ना। फिर साथ वो बेच रहा था, वो बैंड होता है ना हाथ वाला, तो वो उसने मेरे को दिया कि ये लो रिटर्न करके। मैंने कहा, ठीक है भैया। देन उसके बाद फिर मैंने ऐसे गूगल, जब वो शाम हुआ ना, तो मैं ऐसे देख रहा था वो करना का, ऐसे कुछ आ रहा था कुछ फोटो, तो मेरे को एक फोटो दिखा जिसमें कि आई टुक अ फोटो विद दैट गाय, Mm-hmm. एंड 4 years some back. yeah, 4 years back, Yeah. and maybe not that night, but maybe after couple of days when I was sitting, I sat editing. Then उसके बाद मेरे को रियलाइज, अरे ये तो वो है, राहुल है, ही वी टॉक्ड लास्ट टाइम, एंड फिर मैं वो उससे पूछा कि तुमको याद है हम लोग मिले थे, तो ही वाज लाइक या मेरे को पता है, तो अलग बताया कि नहीं। देन या उसको फिर मैंने जितना पैसा हुआ वो दिया, फिर उसने मेरे को फ्री आइसक्रीम, जब भी शाम में आता था वहाँ बीच में मेरे को फ्री आइसक्रीम खिलाता था बहुत सारा, तो उसका भी फिर मैं हिसाब करके फिर वहां से निकल गया। फिर सेकंड ऐसे ही एपिसोड थे कुछ कुछ। So what is the most unexpected gift or lesson or something that you got from some stranger in all your travels? Unexpectedly, some lesson or gift or something that somebody has given you. Yeah, expected gift or lesson Gift, lesson, anything, something that. question. Uh, ऐसे तो अनएक्सपेक्टेड मेरे को गिफ्ट कोई इंसान ने ऐसे दिए, फेवर तो ऐसे चलते रहते हैं। वैसे नागालैंड हैज बीन माय फेवरेट Acha. स्टेट, वेरी जेनरस लोग वहाँ पे। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक मेघालय फॉर व्यूज, लैंडस्केप्स, एंड हम्पी, वेरी वेरी स्पेशल। Mm-hmm. बट जो अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस जो मेरे को मिला, स्पेशल एक्सपीरियंस जो मेरे को मिला, दैट आई गॉट स्पिरिचुअली व्हेन आई वेंट देयर, नीम करोरी बाबा वाला जो टेम्पल। So I went there, and in the morning, I stopped that after 250 days. I stopped making those daily shots. So उस समय क्या होता है ना कि when you regularly work daily, then one day you stop, then you think a lot, because you have got a lot of time. So with that thinking, you get anxiety and all. So I started getting that. So because of that, I went there and I stayed for like a week. So वहाँ पे no one told me that you should meditate, or that. I did not meditate, Mm. never. But when after reaching there, I went there in the morning, 6 a.m., 6:30, and just sat there. And then I realized ki, okay. Then I did something. Something happened. Then I went deep Mm. and thinking about something. Then later, after a few days, few weeks, when I actually tried to learn about what meditation is, then I realized that the thing that used to happen there while I was sitting in the temple, which was not intentionally a meditation, was actually a meditation, Mm. technically. So Without that's even how, without even you realizing or without learning it anywhere, it just happened. You were just reflecting on it. yeah. It gave immense peacefulness. Mm. Is what I मेरे को याद आता है उस experience से. What about most like scariest experience, something unexpected that happened? I think in one of your this the Ladakh short reel when you were traveling, your phone died. Nah, was that scary for you?
No, no, not at all. That was very unexpected and Uh, spontaneous. Even though it is like very, sometimes, some situation are very hard for me, but uh. I feel happy because that is such a great content for my story. Hmm. So what is That's a, what is the most scariest one like that? the scariest one is the one that I do not capture in my, I do Hmm. not show people. Hmm. So scariest one is like when one जो एक हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, एक दो हुआ है. तो एक में ऐसा था कि I was in Meghalaya and I जब when I was in Shillong, the capital city, तो वहां से जाते हैं लोग स्कूटर लेके अलग अलग जगह जगह है ना, डबल डेकर ब्रिज हो गया या फिर डॉकी जो वो ट्रांसपेरेंट रिवर होता है वो, उसको देखने के लिए. तो वो स्कूटी हायर में लेते हैं. तो मैंने भी लिया वहाँ. आई वॉज शूटिंग दैट एवरीथिंग. तो उस समय क्या हुआ था कि स्कूटी लेने के बाद स्टार्ट नहीं हुआ. जब स्टार्ट नहीं हुआ तो देन आई, थोड़ा मैं ज्यादा दूर नहीं गया था, तो जिससे लिया था ना, वो जो मालिक था स्कूटी का, हु वाज रेंटिंग द स्कूटीज, उसको बुलाया. मैंने बोला कि भैया नहीं स्टार्ट हो रहा है. तो ही डिड समथिंग एंड ही जस्ट स्टार्टेड इट, है ना. तो वो एक स्टोरी था डेली वाला. तो मैंने बना दिया ऐसे स्टोरी, है ना, रील में डाल के कि हाँ उसको वो स्टार्ट कर दिया और उसको मैंने हीरो बना दिया कि आई डिड नॉट नो एंड ही जस्ट केम एंड एक ही पंच में उसने स्टार्ट कर दिया. तो वो एक आता है ना, शीट्स आता है ना, स्नूप डॉग वाला हीरो वाला, Uh, डीओ thug डबल, life, thug life thing. Uh, हाँ था लगा वाला. yeah. तो मैंने लगा दिया. तो अब मेरे को, मैं तो ठीक था, मतलब आई वाज फाइन, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन. तो कुछ दिन बाद एक एक हफ्ते में आई वाज इन चेरापूंजी. तो Uh, चेरापूंजी में आया, जो शिलोंग से आई थिंक 2 घंटे दूर होगा, 2-3 घंटे दूर चेरापूंजी. तो चेरापूंजी में आई वाज इन द सेम प्लेस, which in the same family, with the same family, जिसका रिलेटिव जो है वो उस बंदे का रिलेटिव था, मतलब दे वर chalo. कनेक्ट. Okay. तो मैं एक रात में आराम से, आई वाज जस्ट आउटसाइड एंड आई वाज टॉकिंग ऑन फोन. उसके बाद फोन रख के मैं खाना खा के आया, तो कॉल आता है. तो अंधेरा था, मैं बाहर था. अंदर जो मेरा बेडरूम था, वो 4-5 बेड्स थे क्योंकि डॉर्मेट्री था, वहां से लाइट आ रहा था थोड़ा थोड़ा. तो मैं ऐसे करके बैठा और लाइट को देखते हुए मैं कॉल उठाया. तो बोलता है कि इस इज अश्वनी थापा. तो मैंने बोला यस. तो बोलता है कि आई एम फन्ना टेकाना एंड वी हैव मेट बिफोर, यू रेंटेड स्कूटी फ्रॉम मी. तो मेरे को याद था कि उस बंदे से काफी अच्छा बात हुआ था मेरा, काफी Uh, फ्रेंडली, uh, ब्रदरली. तो मैंने एकदम, है ना, अच्छे टोन में, अरे ब्रदर हाउ आर यू, हाउ डू यू रिमेम्बर मी, कैसे कॉल किया ऐसे. तो उसका जो रिप्लाई था काफी थोड़ा फ्रेंडली नहीं था, सीरियस था आवर टोन उसका. तो उसने कहा कि आई सॉ योर वीडियो दैट यू मेड हियर इन शिलोंग एंड I got a call from my, actually I got a call from my friends this morning and they showed me some video of yours and there was me and you, तुमने मेरे को चश्मा लगाया है, ऐसे क्या दिखाया, you tried to make fun of me. मैंने अच्छा. नो नो नो, मैंने बोला नहीं नहीं फन नहीं है ब्रो, मैंने तो तुम्हें हीरो बनाया, तुमने तो स्टार्ट किया है ना. तो वो बोलता है नो नो नो, इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल, यू डिड नॉट आस्क मी Hmm. बिफोर. मैं कहा ओके आई एम सॉरी, Hmm. वो मैं स्टोरी डाल देता हूँ आई एम सॉरी करके, है ना, उसको हटा देता हूँ. तो बोलते नो 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 नो, द वीडियो इज ऑलरेडी रीच्ड 200K और 250K व्यूज एंड मेरा जो रेपुटेशन खराब हुआ है उन 2-2.5 लाख लोगों के सामने, उसका क्या होगा, Hmm. उसको कैसे, उसको कैसे भरपाई करेंगे. तो मैंने कहा कि देखो मैं तो, मेरे को तो नहीं पता कैसे भरपाई करेंगे, बट आई एम सो सॉरी. मैं एक अपॉलॉजी में स्टोरी डाल देता हूँ, उसको हटा सकता हूँ स्टोरी, मतलब वीडियो को. दैट इज व्हाट आई कैन डू एट मैक्स. उसने कहा कि नो आई एम सॉरी दैट वोंट वर्क, it's totally unacceptable. I won't let that happen, है ना. Because there are people, I have friends in politics and there are people who are making fun of me. So वो बोलता है कि tomorrow in 1 hour I'm calling you and you tell me what can we do, Hmm. है ना. ये it's pretty serious. तो जैसे ही फोन कटा, मैंने मैनेजर को कॉल किया, मैंने पूछा ये हो रहा है, क्या करना है. तो उसने कहा कि भाई मत जाना, अगर तुम गए तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारा लैपटॉप है, कैमरा है, सब कुछ है Hmm. ना. Hmm. और वो गुस्से में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, मार सकते हैं, तुम्हारा लूट सकते हैं. Hmm. एंड that time I realized कि oh shit, I mean I have to run, है ना. Hmm. And Hmm. not run now because it's late and I can only go in the morning. Hmm. Hmm. प्रॉब्लम ये था कि जहाँ पे मैं रह रहा था उसका उसका रिलेटिव था वो. Hmm.
तो मैंने कॉल नहीं किया, है ना, मैंने कॉल नहीं किया, उसका मैसेज आया कि ये तुमने कॉल नहीं किया ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आऊंगा, ऐसे मैंने ऐसे झूठ बोल दिया आऊंगा कल सुबह, डोंट वरी। हम्म, तो वो कुछ नहीं किया, तो रात भर मैं वहीं पर रहा, मेरे को हम्म। डर था ना वो आ सकता है करके। तो मैंने प्रॉब्लम ये था कि जिस रूम में मैं रह रहा था ना वहाँ का ताला भी खराब था। Okay. ताला भी खराब था। तो मैंने सोचा क्या करा, क्या पता नहीं, तो मैंने कुछ ऐसे करके टेबल जो था ना रूम के अंदर उसको ऐसे पत्थर में ऐसे अटैच करके, दरवाजे का जो कुंडी होता है उसमें ऐसे अटैच करके उसको एकदम टाइट बना दिया। हम्म, और कुछ दिन पहले मैं अपने मामा के घर में था सिलीगुड़ी में, तो उन्होंने मेरे को प्रोटेक्शन के लिए एक हथौड़ा दिया था। तो मैं अपने छाती में ऐसे हथौड़ा रख के ऐसे सो रहा था। तो फिर मॉर्निंग यू गॉट अप हाँ, एंड इमीडिएटली। हाँ, मॉर्निंग मेरे को था प्लान कि 6 बजे उठ जाना और 6:30 तक है ना निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। बट अलार्म ही पता नहीं क्या हुआ, मेरे को नींद ही 7:30 में से टूटा। मैं सोचा ओ शिट, और लेट हो गया। 7:30 बजे उठ के तैसे से तैयार होके भागा, कार में बैठा, और मेरे को उसी जगह से जाना था, मेरे को भागने के लिए भी मेरे को उसके घर के बाजू से ही जाना था, ऐसा रास्ता था। तो मैं बैठा, तो अचानक से मेरे को जैसे डर में क्या होता है ना, कान सुनाई देता है ना कि हाँ, कुछ नहीं भी हो रहा है तब भी ऐसे गूंज रहा है ना कि हाँ ये। तो मेरे को ऐसे सुना, ऐसे लगा कि वो ड्राइवर किसी को कॉल करके बोल रहा है कि हाँ अश्विनी मेरे पास है करके, मैं उसको ला रहा हूँ। तो जैसे तैसे नहीं That हुआ sounds लेकिन। that sounds pretty scary only. यार Yes. कैसे पता है, Hmm. लड़की जो शॉल होता है ना, मेरी मामी ने मेरे को लड़की वाला अपना शॉल दिया था, तो मैं शॉल ऐसे ओढ़ के आई Covered कैमोफ्लेज face. एज वुमेन, Hmm. आई रैन फ्रॉम देयर। Yeah, these are things that nobody realizes when that you face when you're making content. एग्जैक्टली। Uh, so so your whole point of your even your theme was reaching 1 million subscribers and then send Ashwani back home. Nah. So या या what is home mean? What is like home? Is it a physical place or like what does home mean to you? या एक्चुअली दिस द प्रोजेक्ट आई स्टार्टेड दैट Hmm. वाज फॉर goal was 1 million, okay. Hmm. Hmm. But the thing was, I had in mind कि 1 million जो मैं कर रहा हूँ इसका एक गोल है, that is not just 1 million कि हाँ 1 million करने के लिए वन I started this। Hmm. 1 million का ऐसा था प्लान कि 1 million होगा तो इसका मतलब ये है कि उतना एक लेवल तक पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मैं यूट्यूब को एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ Source of income was. की तरह देख सकूं। तब जब जब मेरा 700K हो गया ना, तो मतलब 7 लाख हो गया 10 लाख में से, तो देन आई मैंने देखा कि कुछ हो ही नहीं रहा है ना। अब बिकॉज आई वाज मेकिंग शॉर्ट्स, Yeah. शॉर्ट्स में उतना व्यू नहीं आता। तो देन आई आई हैड सम मैनेजर्स, a lot of people who were lot of companies जिनके साथ मैं था, but they were also they didn't comment anything, then I talked to many people, many creators, many things, and they were like, with shorts there's no guarantee, and there are many people who did that and who achieved that, and they were they said कि नहीं भाई नहीं होता। सो उसके बाद देन आई लेफ्ट, जो वो जो शॉर्ट्स जो डेली डालता था ना वो, Hmm. देन आई एंड आई स्टार्टेड मेकिंग बिग वीडियोस इंस्टेड। मेरे को लगा कि चलो शॉर्ट्स नहीं तो मैं बड़े वीडियोस जो है Okay. वो बनाऊंगा। Hmm. Hmm. तो विद टाइम तो ऐसे हुआ, ऐसे करते करते बनाते बनाते बड़े वीडियो में तो टाइम लगता है, तो Hmm. अपन वही वही हुआ, मतलब बनाते बनाते मेरे को आइडियाज बहुत सारे चीजें हो रही थी उस समय। 1.5 साल दूर घर से रहने के बाद थोड़ा मन भी अजीब अलोन अलोन हो रहा था। Hmm. और डेली जो शॉर्ट जो बनाता था उससे छोड़कर जो मेरे को इतना सारा टाइम मिला सोचने के लिए, तो मैं थोड़ा एंग्जाइटी में भी चला गया। तो इसकी वजह से मेंटली मैं काफी सफर करने लगा। Hmm. और साथ ही साथ बड़े वीडियोस का गारंटी नहीं है, कभी कोई आज नहीं होगा कल होगा, या फिर 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी हो सकता है। Hmm. Hmm. तो मैंने तो ऐसे करते करते मेरा फंड्स जो था वो भी कम होता होता Hmm. गया ना, और इनकम जो सो उतना नहीं था। Hmm. तो इसी वजह से फिर I stopped traveling, and I was in Kolkata for few months, Hmm. exploring and going to NGOs and all, just to capture those experiences बीच Hmm. बीच में। Hmm.
तो उसके बाद फिर आफ्टर 800 के आई स्टॉप्ड दिस मिशन, Hmm. नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू और आई फील आई कुडंट, जस्ट Hmm. बिकॉज द गोल जो मेरे को चाहिए था ये 1 मिलियन कवर करने के बाद, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं होता। Hmm. सो इस मैंने फिर वो उसको ड्रॉप कर दिया कि ये जो मेरा गोल था आई एम ड्रॉपिंग। Hmm. It could be, people say, what I believe is ki it's not about obviously failing at something hurts, but mm, if you failed or not, this only you can decide, है ना। Hmm. For Hmm. मेरे लिए था कि लोग दूसरों की नजर में था कि हाँ ये नहीं कर सका, इट्स अ फेलियर, है ना। Hmm. तो मेरे को लगा ठीक है, इट्स देयर आउटसाइड व्यूज, बट मेरा जो रीजन था ये ना करने, ना इट्स ना करने की वजह से नहीं था, बट मेरे को डिलिबरेटली करना ही नहीं था, बिकॉज माई गोल हैड चेंज्ड नाउ, Yeah. है ना। तो मैंने वो छोड़ दिया, बट अल्टीमेटली अभी मेरे को लगता है कि हाँ, एनीवेज वट एवर इट वाज, मेरा वो गोल तो था, एंड आई हैड टोल्ड पीपल दैट कि मैं नहीं जाऊंगा, बट आई वेंट, सो आई फेल्ड देयर, इन नजर में। तो Hmm. अभी इसके लिए आई विल डू समथिंग इन द फ्यूचर, जिसमें कि आई विल सेट अ हायर गोल एंड आई विल Hmm. ट्राई टू कंप्लीट दैट, एंड आई विल कंप्लीट दैट, क्योंकि उस समय फिर फंड का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सो आई विल डू दैट। So what is your now the future goal? Like, what do you see yourself uh, doing now? And even outside of content and YouTube and all, what do you see outside of that? So say even like 10 years from now, where do you see yourself? So basically, I have a very plain dream. My dream is what a vision, basically future vision, कि हाँ मेरे पास पैसे होंगे, बट करियर, पैसे तो ठीक है, किसी भी फील्ड में काम करोगे अच्छा, फॉर लॉन्ग यू विल अर्न, बट माय ड्रीम लाइफ इज लाइक, I have some a small house, जिसमें बगल में मेरा आगे, घर के आगे या थोड़ा दूर में एक कैफे होगा, कॉफी, है ना, कॉफी, और इट्स जनरली कैफे, Hmm. कैफे, क्योंकि आई रियली लव कॉफी, एंड Hmm. ट्रैवल करते समय मैं बनाता हूँ कॉफी, लोगों को दिखाता हूँ को कैमरे में भी, और बीच में कुर्ग भी गया था Have you had the टू। best coffee? Quick side question. सॉरी, Side question. Where have you had the best coffee? Best coffee. in Hampi there's a cafe, mango cafe or something like that. Because my wife likes coffee a lot, so good to know. Oh, I, okay, so and it's close. Hampi is close by for us from Bangalore, so oh I really, yeah, you go to Hampi and you go to Mango Cafe. Mango Cafe, and from there you try two things. First is uh, Nimbu Pani. Okay, You will never, I mean, that is the best Nimbu Pani I've ever had. that's surprising because I don't know how you can make nimbu pani special. Nimbu pani is just nimbu pani, but Yeah, I also don't know how they make it. uh, Pretty awesome. no. But back to your original thing. So you'll have a cafe in front of your house. Yeah, a studio, a video editing studio nearby, a photography studio, and a woodworking studio along with together, together. Or cafe में Polaroids होंगे, they can click their pictures, and libraries होंगी, books होंगी, there are a couple of a particular setup, Hmm, 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 Uh, but work-wise, I would still try to, I'll still be making, I'll traveling places to make click pictures and make videos about my experiences, or and the big goal before I die is to work on waste management Yeah, for my country. that was something that I found very interesting. That's one of your passions. That's what I really wanted to understand a little more about that. Yeah, actually, it's a long story. Back in Hmm, 2018, I went to Gokarna, and I was in IT, I was in corporate, hmm, so अकेले गया था, first solo travel. तो वहाँ पे when I went there, I met with a couple of people, hmm, but especially I remember Mark. He was from Austria, hmm, and he was my neighbor in that cafe. hmm, Beach था आगे, hmm, और he used to smoke a lot of that weed, है ना, hmm, 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 पर खांसता रहता था, and he's pretty old, like 45. That time I was like 23 or 24 or something like that. So he was like not very old, like 40, 45 ऐसा होगा, but his beard जो दाढ़ी होता है ना, it was white, hmm, hmm, and he looked like 65. hmm.
So he used to cough and रात भर खांसता रहता था. In the morning, he used to come out of his bed. Then we used to talk for some time, and he used to tell his stories that he was a civil engineer from Austria, and he worked for 2 months, and for 10 months he travels all around the world. Wow. Yeah, so Mm, he traveled for he don't capture any stories on the videos, but he just traveled for his own fun. mm. So 42 countries is what he had traveled at that time. And he told me that time I was very young. He told that there's a lot of opportunities in India, and uh, I personally have been very picky about the garbages. I do not throw garbages here and there from the starting on itself. Mm, mm, I don't like. अगर मैंने कहीं खाया भी बाहर में तो अपने पॉकेट में डाल देता हूँ मैं mm, करके. So he was like work this he started talk about the waste management culture in his country, that how kids are taught कि हाँ रेड कलर मतलब वेट वेस्ट, ग्रीन कलर मतलब ड्राई वेस्ट, ब्लू mm, कलर मतलब. सो साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में सेट होता है कि हाँ ऐसे वेस्ट वेस्ट है ऐसा, और इस डब्बे में हमको फेंकना है, मेरे को पता है. When they become old, they still know that कि हाँ every color is attached to that type of waste. mm, mm, मैंने कहा वाह ऐसा होता है ये. तो उसने बहुत सारी कहानियां सुनाई अलग अलग कंट्रीज की उस चीज के बारे में. फिर बोला कि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, तो इतने सारे कितना गंदा है, लेकिन यहाँ पे तभी भी फैला रहता है. पीपल लोकल पीपल व्हेन वो लोग जब बाहर से आते हैं, दे ट्राई टू क्लीन द बीच, एंड द लोकल्स आर द पीपल हु कम फर्स्ट एंड से दैट व्हाट आर यू डूइंग, इट इज नॉट रिक्वायर्ड लाइक दैट, है ना. तो मैंने कहा ओह शिट, दैट्स सेम शेम करके. फिर ऐसे बात करते करते गया, है ना. एट दैट यंग एज आई वाज pretty influenced by that person because he was quite experienced to me. और उस समय मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था. So talking to a person who's not from my country mm. had that kind of that मेरे अंदर था कि हाँ Okay. मैं New टॉक perspective. आई टॉक टू अंग्रेज से बात किया मैंने, उसने ये बताया मेरे को, इतना ही वो ऐसे ऐसे कर चुका है, तो Mm, ही मस्ट बी जेन्यून गाय करके. तो वो मेरे दिमाग में था कि हाँ मैं भी करूँ. उसने बोला था कि तुम करना, तुम mm, जब ऐसे कुछ कर सकते हो तो जरूर करना. तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को करने का मन भी है बिकॉज आई रियली वांट टू सी माय कंट्री क्लीन. mm, तो बोला ठीक. तो सेकंड टाइम मैं गया 2020 में. तो उस समय मार्क नहीं था वहां पे. नहीं नहीं, उस समय मार्क नहीं था, मेरे को लगा नहीं था, लेकिन एक हफ्ते रहने के बाद लास्ट डे ही केम. Again, coincidence or you messaged him or something? नो आई डिडंट नो हिज आईडी एंड नो नंबर. Mm, बट मैंने उस कैफे के मालिक से मैंने पूछा था ना कि वो मार्क था पिछले बारी, तो वो आया क्या. तो ही उसको पता नहीं चला कि मैं किसके बारे में बात करता हूँ. तो आखिरी दिन जब मैं जब जा रहा था अगले दिन, तो कोइंसिडेंटली वहां पे एक कपल था. तो मैं बाहर नहीं रह रहा था ना, आई वॉज नॉट इन द कैफे दैट टाइम, बट वहां पे किसी का कपल का बर्थडे था, लड़की का. दे इनवाइटेड मी फॉर कटिंग द केक, आई वेंट देयर, एंड दैट इज द टाइम व्हेन मार्क वाज कमिंग फ्रॉम द बीच. तो कैफे का मालिक आगे बोलता कि तुम इसी मार्क की बात कर रहे थे क्या. तो मैंने कहा हाँ. तो उसने बोला कि चलो 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 मिलाता हूँ करके. तो वो आया, उसको दाढ़ी वैसी था, मेरे को पहचान में आ गया. एंड मैंने वो बोला कि डू यू रिमेम्बर मी. आई तो बोलता है नहीं आई डोंट रिमेम्बर यू. तो बोला ओके इट्स ओके. तो हाँ उसके बाद दो बार हो ना, दो बार आई मेट हिम. थर्ड टाइम आई वेंट रिसेंटली, ये mm, मिशन ये मिलियन वाले में, while making videos. That time I went there and asked the same cafe guy ना कि कहाँ है मार्क. तो उसने कहा कि वो तो नेपाल गया था, कुछ दिन पहले नेपाल में था. तो वहां पे कुछ वो बहुत खा गांजा फूकता था ना, तो उसका लंग्स में कुछ इशू हो गया, वो ही इज डेड नाउ. oh shit. हम्म. सो मेरे को लगा कि आई वाज सैड. Mm, फिर मैंने सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू आई विल डू दिस फॉर माय कंट्री. mm, सेकंड, I have a very deep story. When I was somehow connected to Mark, even though I didn't know him. mm. So for him, I will do this. Nice. Nice.
Cool. So, and what about on the content and YouTube side, and in the near term, like next couple of years, what do you want to? What are your goals? And the only thing that stops me from what I'm doing right now is the shortage of funds. Hmm. If I have enough funds, then what I have in mind is to work on the same thing that I plan to do in the future. That is, घूमना फिरना तो ठीक है. People will get to know about places and the taste of the food Hmm. and those things Hmm. from other people and other creators. Hmm. But बनते हुए कुछ करना, कुछ चीज को इनकलकेट करना विद इन द पीपल, है ना, उनके हार्ट में, दिमाग में फिक्स करना कि हाँ, Hmm. this guy is doing this. So basically I want to be an example, set an example for mm, for this revolution, that waste management, that sustainable thing, revolution को और आगे बढ़ाना Hmm. is what we dream to Hmm. achieve. Hmm. And with that, I do not want to lose the storytelling that I used to go to different places, meeting new people and capturing those things. तो Hmm. दोनों को combine करके. Combine both. Hmm. Awesome. Awesome. Cool, Ashwani. So I think parallelly, even we are discussing with you, na, that maybe we can collaborate with you and we can figure something out. So hopefully after this video also we'll again catch up again and discuss how we can work together. And because I think we align a lot on terms of like your authenticity and what your goals and visions are. There's a lot of it that aligns. So definitely we'll take it forward. But yeah, this interview actually technically we thought that we'll make these all short interviews, 15 minutes. But then since it's the first one and it was fun also, I enjoyed just talking to you. So now it ended up happening for almost 1 hour now. Let's see, maybe later on we'll cut it, make it a little shorter or whatever, and try to get a transcription and all that stuff. But yeah, otherwise it was amazing to talk to you, get all of these really interesting stories. So it's my first time talking to a content creator and YouTuber. I don't have any idea about it. So like what are a lot of the things that you said na, about the stuff, it was like an eye opener for me. Especially that scary story that you said, that like I would have never thought that people face those kind of issues also when they're creating content. I hope you also had a good time. Yeah, it was fun. I Yeah. mean, it's always fun to find a listener. Yeah.